Welcome to Policy Pulse, the podcast where we explore the intersection of development and economic policy. I'm Hasham Tosif, and today we're joined by Dr. Faraz Saeed, an assistant professor at LUMS and a distinguished economist whose research sheds light on poverty alleviation strategies through the lens of behavioral economics. She has conducted groundbreaking field and lab experiments that provide unique insights into poverty, and we're excited to discuss how these behavioral insights can shape impactful policy. Dr. Saeed, thank you for joining us. Thank you for having me. So just to start off the conversation, can you just inform us how you became interested in this field of behavioral economics? So I think as a field, economics has moved away from thinking that everyone is rational. So I know we teach this in classes because that's the building block. But I think as a field, we understand that it's unreasonable to expect people to have well-defined preferences or to know what their preferences are and act according to a very cold calculation of benefit and cost and, that kind of a balance at all times. And there are different ways of dealing with this. But what behavioral economics does is it learns from other social sciences, and it says, look, essentially we're all humans. And as humans, we make some quick decisions. So sometimes we have a rule of thumb, right? So we say, is situation mein jab mere paas time kam hoga, this is how I act as reflex. And there are other cases where we may not realize we're doing something, but every time we're in a similar situation, we act a similar way. So what behavioral economics says, it says we can figure out that people are not irrational because they act systematically, but let's try to figure out कि वो systematic वजह है क्या. So काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आप कहते हो no one likes risk, right? But we all like risk at different levels. So we have different levels of risk aversion, but one thing that we can agree on is that in general in the population, we see लोगों का risk level for gain is different from loss. So वो लॉस को बहुत अवॉइड करना चाहते हैं, गेन पे इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं होंगे जितना लॉस को अवॉइड करने के लिए रिस्क लेने को तैयार होंगे. And this is something that they see across the board, right? So that's a systematic bias that has been now acknowledged. In fact, इस पर Nobel Prize मिल चुके हैं to psychologists, not economists. So that's the field. It basically tries to find. It goes with the assumption people are not irrational. Maybe they're making decisions, and we don't know why they're making those decisions. Let's try to figure out कि वो systematically हम उनको किस तरह उनको देखें, conceptualize कैसे करें. So I think as a field that appeals to me, understanding that people are under stress, under time stress, under financial stress, and they may make decisions that seemingly you may think that it doesn't make sense, but it makes a lot of sense to them. Your research particularly focuses on low-income settings. ठीक है. So have you noticed or observed some common behavioral barriers that are faced by the poverty-stricken communities that may or may not prevent them from making the optimal economic choice? Yes. So, other than a behavioral economist, I am at core a development economist, which is why I work with low-income households. And in particular, within the low-income households, I work with the more marginalized. So those are usually women and, in a lot of cases, children as well, and minorities. And so what you find there is that in a resource-constrained context, like poor households, they have a lot of scarcity, and the scarcity is not the way that हम books में पढ़ते हैं कि जी पैसे नहीं हैं. Scarcity है कि time भी नहीं है, attention भी नहीं है. You have a lot of stresses. जिस stress में आप आके जब काम करते हो तो आपका cognition, जिसको हम कहते हैं mental bandwidth, आपकी mental bandwidth बहुत occupy होती है with things that you have to do just to survive. And when you have a little bit more resource, तो आपके पास वो bandwidth थोड़ी सी खुल जाती है. And then you can say, अच्छा पर ये decisions भी अपनी efficient तरीके से ले लें, using economics speak, efficient decision making and all. पर जब आपके पास वो bandwidth ना हो तो आप अक्सर reflex action में काम कर रहे होते हो. So that is something that we see across the board regardless of the kind of question we're looking at. So I work with questions of education, of health, of financial access, so different themes. बट उसमें जो एक अंडरलाइंग आपको कंस्ट्रेंट नज़र आती है वो ये है कि जब आपके पास स्केर्स टाइम है और स्केर्स रिसोर्स है तो आपकी बैंडविड्थ बहुत ऑक्यूपाइड है with making sure that your children are getting 3 meals a day or in fact even 2 meals a day. Money is at the topmost of your mind and you may not make very efficient decisions in the sense कि आप long term investment के बारे में ना सोचो because आपका अभी फिक्र ये है पैसा भी चाहिए, not कि फ्यूचर में कब चाहिए. औरतों में और भी ज़्यादा ये होता है क्योंकि उनका
other than the fact that they don't have resources within the household, उनके पास टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है. So उनका टाइम चल रहा होता है जो कि उन्होंने चाहे और काम करना हो, साथ उनका घर का काम चल रहा होता है. So अगर हम कहें जी औरतों को आप बिजनेस सेट करें, we need to understand that उनका bandwidth is going to be occupied not just with what they have to do for the business, but what they have to do simultaneously for the home. So उसमें कुछ decisions होंगी जो कि शायद हमें लग रहा हो बज़ाहिरन कि वो एक्चुअली एफिशिएंट डिसीजन नहीं ले रहे, बट वो अपने हिसाब से जितनी उनकी अटेंशन उस हिसाब से वो दे आर मेकिंग द बेस्ट डिसीजन दैट दे कैन. सो एज अ रूल आई थिंक इट्स good to understand this about low-income households, that this is, these are stressed households. And so as households that are under stress, उनकी decision-making facilitate करने का तरीका भी हमें थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए. Okay, so what I am getting is कि it's more of a problem of mental bandwidth. So how can behavioral economics particularly address that in comparison to what we call neoclassical economics? And that's a great question. So we do now have literature that is looking at this. So this is again थोड़ा से देर से ये काम शुरू हुआ है, because initially जब ये field भी शुरू हुई है तो बहुत developing world में rich universities and university students के साथ इस किस्म के experiments हुए हैं. But now what has happened is that this literature has moved towards the development side, और वहाँ पे field में काम होता है. मतलब we go to the households rather than कि उनको lab में बुलाया जाए जो भी. तो उससे ये है कि जो नौयत है जो सवाल की वो फ़र्क होती जा रही है. सो इसमें अब हमारे पास एविडेंस आ रही है कि अगर एक फार्मर है जो, एज यू कैन इमेजिन, अ फार्मर हैज़ दे हैव अ वेरी सिक्लिकल काइंड ऑफ कैश फ्लो, राइट. सो दे नो कि कब कैश फ्लो आ रहा है, विच इज़ यूजली आफ्टर हार्वेस्ट. उससे पहले वो बहुत दे टाइट ऑन कैश एज वेल. So that means there is a cyclical way of how they're making decisions as well. Because stress point कब आएगा इस टाइम पे, I'm very worried about if I'll have enough money to pay my workers at the time of harvest, so I'm just focused on that. जब हार्वेस्ट आता है उसके बाद मेरे पास जब कैश बहुत ज़्यादा आता है, आई कैन मेक अ लॉट ऑफ अदर डिसीजंस. उस वक्त वो अपने बच्चों की शादियों के डिसीजंस भी ले लेते हैं आराम से. वो ये भी देख लेते हैं कि हमने पहले से लेके रखना है, कुछ सामान तो रख लें, आगे चाहिए होगा. सो वो उनकी बैंडविड्थ थोड़ी सी खुल जाती है. सो ये जो लिटरेचर है वो इसी चीज़ को एग्जैक्टली देख रहा है. वो पहले चीज़ उन्होंने ये डॉक्यूमेंट की कि डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द ईयर vis-a-vis your harvest season, people do have they're feeling mentally better. So in terms of just measuring levels of well-being, depression, and feeling confident about themselves, to the fact that they're making seemingly efficient decisions, those change with this agricultural cycle. So अब interventions उसके हिसाब से क्या आ रही हैं कि अगर हमें ये डॉक्यूमेंट हो गया है कि लोगों के पास डिसीजंस जब लेनी है, लेट्स से फर्टिलाइज़र की डिसीजन लेनी है, वो उन्होंने लेनी है हार्वेस्ट से पहले, और हार्वेस्ट से पहले उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो उसको डिले कर देते हैं. वेल व्हाट देव डन इज देव सेड ओके लेट्स मेक प्रोडक्ट्स जो कि आप हार्वेस्ट पे कमिट कर लो कि आपको बेशक 4 महीने बाद फर्टिलाइज़र मिलेगा, बट आप आज ख़रीद लो, बिकॉज अभी आपके पास कैश फ्लो है. यू कैन मेक दैट डिसीजन, यू फील कॉन्फिडेंट इन दैट डिसीजन, एंड देन व्हेन यू नीड द फर्टिलाइज़र यू विल हैव इट. And if you think about it, these kind of interventions are very simple. वो कह रहे हैं टाइमिंग चेंज कर दें, उस टाइमिंग पे ले आएँ जब बैंडविड्थ ज़रा ज़्यादा है, और उस पे ना लाएँ जहाँ पे बैंडविड्थ कम है. Similarly, what they're doing is they're saying जो प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र करते हैं लो इनकम हाउसहोल्ड्स को, फॉर इंस्टेंस लो इनकम हाउसहोल्ड्स पे बहुत ये इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे पॉलिसी मेकर से भी कि जी वो अपने हालात खुद नहीं ठीक करते, सेव नहीं करते. Well, saving products, if they're being offered at these times जहाँ पे उनके पास कैश फ्लो नहीं है, वो नहीं लेंगे. But if you were to offer saving products जब उनके पास कैश फ्लो हो, जब वो ये डिसीजन ले सकें, तो फिर वो ले लेंगे. So that's what people are now doing. They're changing their timing. They're changing how they frame a product. So a product that says, here's a saving product, आप इसको 10 साल के लिए बंद करके रख लो, या चलो साल के लिए भी बंद करके रख लो, वो नहीं लेंगे. But अगर आप उन्हें ये कहोगे कि जी ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप थोड़ी सी जमा पूंजी करके आपको एक लमसम बाद में मिल जाएगा, आप उस चीज़ को ले लेंगे. इट्स जस्ट द वे हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल in a way that it aligns with their interests. And so that's something that I think this new literature is really exciting, is moving towards. And are there any particular policies that you have personally worked on जिसमें like there was some sort of this इसी type की intervention behavioral? I have. So ये जैसे ये savings वाला जो मैं आपको example दे रही हूँ, this is some work that we've done in Punjab in 5 different districts. And so what we were doing there is, again, these are, the policy question here is, again, it's coming from the fact that they're saying कि जी ये save नहीं करते, इनके पास पैसे आते ही उड़ा देते हैं, right? Which is, if you think about it, it's a bit paternalistic to think this way. And so what we did was we said, well, people are saving, they're just not saving formally. So वो जो save करते हैं वो अक्सर कमिटी डालते हैं. मतलब आप कमिटीज़ हमारे
कल्चर में बहुत कॉमन, इनफैक्ट नॉट जस्ट पाकिस्तान, इन द एंटायर साउथ, आई वुड से ग्लोबल साउथ, इनफॉर्मल सेविंग्स के तरीके बहुत आम हैं. सो वो वैसे तो सेव कर रहे हैं ना, वो आपके साथ नहीं सेव कर रहे. So how do we make sure that the product that they're offering is something that they're familiar with? So what we did is we worked with a microfinance bank and we just reformulated the way that they're offering a product as a way that it's a committee, right? So अब ये committee है, आप बैंक के साथ committee डाल रहे हो, और बैंक जो है वो काउंटर पार्टी है, वो आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने आप पैसे देंगे, और फिर एक महीना होगा जो कि आपको अंदाज़ी से निकालें, जैसे कमेटी काम करती है, आप उससे निकालें कि जब बैंक आपको पैसे देगा, वो लमसम होगा. सो वो भी सेविंग्स प्रोडक्ट हो गया, बट वो इस हिसाब से था जिससे उनको उस चीज़ की समझ आती थी. इन अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वी सेड, एंड दिस इज़ बोरिंग फ्रॉम लिटरेचर दैट डज दिस फॉर फ्लू शॉट्स इन द US. सो उन्होंने कहा जी फ्लू शॉट्स नहीं लेते क्योंकि लोग भूल जाते हैं. सो क्या करना है कि वो आपकी जो फ्लू शॉट का कार्ड मिल जाता है, उस पर आपके सामने पड़ा होगा, आप टिक किए जाओगे, आप कहोगे जी अब आ रहा है टाइम, अब मैंने जाके लगवानी है. एंड ये हमारे जो हेल्थ सेक्टर वो भी ये यूज़ करता है. सो व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न दे गिव देम अ वैक्सीनेशन कार्ड. अब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट तो नहीं है, इट्स जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, बट यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट टू अदर सेटिंग्स. एंड सो वी डिड दैट फॉर अ सेटिंग इन रूरल सिंध, जहाँ पे लोगों को ये मसला आ रहा था कि सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. आई मीन उस पर हमने रिसर्च नहीं की, बट वो द प्रोडक्ट इज़ दैट देयर इज़ अ सोलर प्रोडक्ट दैट जिस पे आपका UPS पे एज यू गो सिस्टम पे चल जाता है. कि जैसे मोबाइल का क्रेडिट भरते हैं उस तरह आप UPS में पैसे भरें, और जितनी देर आपका क्रेडिट है वो चल रहा है, तो 100 रुपया 200 रुपया आपका 1-2 दिन का UPS चला देता है. एंड दीज आर एरियाज जहाँ पे बिजली नहीं आ रही. सो ये नहीं है कि बिजली लोड शेडिंग हो रही है, ये ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है. सो दिस इज़ द ओनली इलेक्ट्रिसिटी दे गेटिंग. बट व्हाट पीपल वर सेइंग इज़ कि हम इतने दूर हैं कि हमें याद नहीं रहता कि हमने ईजी पैसा को पैसे भेजने हैं, क्योंकि ईजी पैसा के थ्रू उस कंपनी को जाएंगे एक्सेट्रा. So we made calendars, like a very simple intervention. This is a calendar. It says this is when your income is coming in. You know, आपका अक्सर दिन की दिहाड़ी होती है, हफ्ते में पैसे आ रहे हैं, इस दिन पैसे आएंगे, इस दिन आप जो है ये पैसे इजी पैसा को भेज दें अगर आपने उसको रिचार्ज करना है. So it's just something, and it's not contractual. No one's binding them to it, and you can't bind people to just following the system as well. But the fact that it's in front of them makes them remember that they have to make payments on time, and it helped them at least have that access to electricity, a continuous access to electricity. Okay, so that it basically acts as a commitment device for them. It helps them commit to something. Just हाँ, और सेल्फ कमिटमेंट, राइट. सो किसी के साथ नहीं है वो, ये नहीं है कि आपको आके घर में आके कोई कहेगा कि जी आपने हमें पैसे नहीं दिए. बिकॉज वो जो प्रोवाइडर था सोलर इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये नहीं कह रहे थे. वो कह रहे थे अच्छा वी नो दीज आर लो इनकम हाउस होल्ड्स, वो हर हफ्ते नहीं पे कर सकते, इट्स फाइन. वो कुछ महीने नहीं पे करते थे, तो फिर वो आके कहते थे कि जी अब आपने UPS अगर नहीं इस्तेमाल करना, हम किसी और को देते हैं एक्सेट्रा. सो there is no like legal or financial obligation on them. It's that they want to pay but they forget to pay. So it's a self-commitment device which is used in a lot of different contexts in behavioral economics, but in these low resource constrained poor households, it works really well. an intrinsic part of your research is particularly lab and field experiments. Can you give us a guideline, like how do you design these, and like especially to study behavior? And as you mentioned कि आपका your focus is on low income, then how do you design for them where there are obviously social preferences and there or traditions that might not respond well to these field experiments? So as you say, there are sometimes social or cultural traditions जिसकी वजह से लोग आपको, अगर आप ऐसे सवाल पूछो लोगों से सेविंग्स करनी चाहिए, वो कहेंगे जी ज़रूर करनी चाहिए, बचत ही मतलब बहुत ज़रूरी है, हम वरना खर्चा कैसे करेंगे, बट वो एक्चुअली कर नहीं रहे होते हैं. सो द आइडिया इज़ कि इफ़ यू आस्क पीपल, दिस इज़ समथिंग वी कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स एज वेल, कि जो सवाल पूछ रहा होता है उस जैसा वो अगला कहता है, इसको वही जवाब दो जो सुनना चाहता है. You know, the things that I work on like gender, उस पर अगर आप किसी से किसी किस्म की बायस या डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो या आप वायलेंस की बात कर रहे हो, तो वो आपको जवाब नहीं देंगे. अगर आप उनसे ये कहो कि जी आपके ये ख़वातीन हैं जिनको आपके घर में ये रिसोर्स मिलनी चाहिए, कि आप उन्हें देंगे, तो वो कहेंगे हाँ जी ज़रूर देंगे, बट एक्चुअली वो ना दे रहे हो. तो ये ऑब्ज़र्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, which is why we use these experiments, these lab experiments or field experiments. The idea is that we want to observe people when they're making these decisions. अब in some cases we can do that very easily, कि हम let's say जैसे ये सेविंग्स वाला प्रोडक्ट था, आपने दे दिया, let's see कि वो अब जब तक ये सेविंग्स प्रोडक्ट चल रहा है किस तरह चलता है, वो उसको टाइम पे करते हैं कि नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिमिलरली वो सोलर प्रोडक्ट.
बट कुछ और आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने घर में देखना है कि अब ये कैश जब घर में चला गया, लेट्स से हमने 1000 रुपये दे दिया, अब वो 1000 रुपया घर में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो औरत को दिया था कि उस औरत के पास वो 1000 रुपया रहता है, या वो किसी और को देती है, या उसके बच्चों पे इस्तेमाल होता है, या वो सारा 1000 का 1000 उसके घर में कोई उसका मियाँ या कोई और ले लेता है और उसके पास नहीं है। अब ये ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी कांट गो एंड सिट इन देयर हाउस होल्ड्स, एंड ऑल्सो दैट वुड बायस देयर डिसीजंस एज वेल। इसमें फिर हम लेके आते हैं लैब्स। सो लैब्स का आइडिया ये शुरू हुई थी वो यही थी कि लिटरली कंप्यूटर लैब जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और हमने एक सिमुलेट किए कि ये सिचुएशन, दिस इज़ द सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू, जो आप डिसीजंस देंगे उस हिसाब से वी विल एक्चुअली पे यू दैट मनी, राइट। सो इट्स एन इंसेंटिवाइज्ड। अब उन घर वालों को हम यहाँ पे लैब में नहीं ला सकते, बट वी टेक द लैब टू देम। सो वी से ओके, वी आर गोइंग टू सेट समथिंग अप, वी आर गोइंग टू पुट यू इन अ सिचुएशन वेयर इट्स यू हैव टू मेक सम डिसीजंस अबाउट मनी। टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से हम कहते हैं कि आप आए, आपने हमारे साथ ये सर्वे किया, हम आपको इस सर्वे के एज अ पार्टिसिपेशन फ़ी, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन विल गिव यू 2000 रुपीज़। अब आप पे डिपेंडेंट, आपने वो 2000 कैसे लेना है, हम आपके अकाउंट में डाल दें, या आपके ईजी पैसा अकाउंट में डाल दें, आपको मोबाइल क्रेडिट दे दें, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने मियाँ को देना चाहते हैं तो हम उसको 2500 भेज देंगे, बट उसके अकाउंट में डालेंगे, right? Now the cost is 2000 to me or 2500 to my husband. If I am an economic agent, what I would say is 2500 is more than 2000, आप उसको दे दें, मैं उससे ले लूँगी, right? और वो मसला ये कि I may not be able to take that money from him, and so what we want to observe is कि क्या वो पैसे sacrifice करने को तैयार हैं, 500 sacrifice कर दो, but वो 2000 मेरे पास हैं, right? I need that control because otherwise I will not get it. And I'm willing to give up 500 for it. And so you're observing a real-time decision that they're making, but it's revealing something to you about the household dynamics, right? So to go back to your question, we look at the research question we're looking at. So अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो कि household में decision making कैसे हो रही है, ख़ास तौर पे पैसों पे क्या negotiation हो रही है, हम उस चीज़ को कहेंगे अच्छा अब हम घर में तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट उसका एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल अगर हमने लैब में कुछ रेप्लिकेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, एंड एक्चुअल मनी दे के हम कैसे करेंगे कि वो असल में ये वे कर रहे हो कि हमें पैसा मिलना है कि नहीं मिलना, किसी और को मिलना है कि नहीं मिलना, and the rest of it is logistics. So obviously there's a lot of arrangement that you have to make along with it, but I think the guiding principle in all of this is what is it that you want to measure, how can you be sure that you get that measure free of any biases, बायसेस पर्टिकुलरली कि आपकी प्रेजेंस से बायस ना आ रहा हो, कि ये ना हो कि वो आपको ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो उनको लगता है आप सुनना चाहते हो कि जी हम तो बड़ा अच्छा हम ख़ानदान है, इसमें लड़ाई नहीं होती, हम सारे बहुत खुशबाश हैं. We want you to honestly say what would happen if you were to get this money, how would you share it? So a main thing that is focused in when you're talking about low income settings is financial education. Are there any ways that we can design educational interventions that also align with insights that are drawn from behavior research? So behavior in the sense if you're giving education, that's not necessarily a behavioral intervention. Usko aap complement kar sakte ho. So the complementing would be how you frame that education. And then also along with that education, if you facilitate how to act the way that you are trying to make them act in, right? So to give you an example, let's suppose savings का ले लेते हैं sample. सेविंग्स करने अब हो सकता है लोग इसलिए ना सेव करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं जी बैंक जाना बड़ा मुश्किल है, बैंक पे अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल है, पेपर वर्क मांगते हैं, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट. सो यू कुड गिव सम काइंड ऑफ अ बेसिक लिटरेसी कोर्स ऑन दैट. माई ओन फीलिंग इज इट डजंट वर्क वेरी वेल बिकॉज दैट्स that may be what people are quoting as the reason why they're not operating the savings account, but I don't think that that's the main reason. The main reason is something else that's happening in the house also. For instance, when I work with women and I ask them कि आपको बिस्प के पैसे आएंगे बट पैसे बैंक अकाउंट में आएंगे. अब बिस्प पे इतना ट्रस्ट है कि उन्हें पता है आ जाएंगे, बट वो बैंक अकाउंट खोलते वक्त वो ये ज़रूर सोचेंगे कि अच्छा जी मैंने जब भी बैंक जाना है मेरे साथ कोई ना कोई तो साथ जाएगा, मैं अकेले तो नहीं जा सकती बिकॉज दिस इज सोसाइटी वी लिव इन, आई विल नीड समवन to accompany me to the bank. And that person is going to have a lot of say in, when I get that cash, they're going to have a lot to say about what that cash is going to be used as, because they know कि cash आया कितना आया इसके हाथ में है, I can, depending on the dynamics again there, they can take control of that cash. So that may be the reason why they're not
opening that account, not the financial education part, but that part. So what you could do is you could say, okay, when there is an education, to counter all of these other constraints that may be working at the same time, you could complement that education with other features of the product. So I know some people in the, let's say in the digital finance market systems are now thinking about कि पाकिस्तान में जैसे औरतों के इजी पैसा एक्सेस बहुत कम है. मतलब आप अगर आप अकाउंट्स देखो कितनी औरतों के वो बहुत कम है, मर्दों के बहुत ज़्यादा हैं. और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ख़ासतौर पर अगर आप अफ्रीका में देखो तो इट्स दी ऑपोजिट, राइट. सो उधर औरतों के एक्चुअली बहुत अकाउंट हैं, पाकिस्तान में पिक ही नहीं हो रहे हैं. तो ये कह रहे हैं जी प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि वो उसको लगता है जब पैसे आएंगे वो मैं तो नहीं कंट्रोल कर रही हूँ, कोई और कंट्रोल कर रहा होगा, बिकॉज उसका अकाउंट होगा. हो सकता है एक सिम है जो मेरे मियाँ के नाम है और उसके अकाउंट पे खुला है, सो मुझे पैसे आएंगे तो उसको भी पता होगा, वो कभी इस्तेमाल भी कर लिया करेगा. So how can we make an account which is exclusively for the female, in the sense that she can, if she wants, she can hide, so to speak, some of that money by putting that in a more like a confidential secret compartment within that digital wallet, right? So they're now thinking very actively about this, which is where the behavioral part comes in. The other thing is, जैसे हमने सेविंग्स की फिर उसी एग्जांपल में अगर आप देखें तो लोग सेव करना शायद भूल जाते हैं, रिमाइंडर्स भेजते हैं. सो रिमाइंडर्स बड़े आसानी से आप कर सकते हो. In Afghanistan, before the US pulled out, they actually had a product where they said लोग सेव नहीं करते, they want to save, but वो एक दफ़ा जब पैसे आ जाए वो एक एडिशनल स्टेप नहीं लिया जाता कि अब हम इसको जाके अकाउंट में डालें. What if जब आप इनको wages पे कर रहे हैं तो वो जाए सेविंग्स अकाउंट में. So there was a mobile company in Afghanistan that said, now the wages that we send to our employees are going to go directly to their savings account and then they're free to take it out. But they noticed that people aren't taking it out because वो एक initial जो step था जो उनके लिए मुश्किल था वो आपने आसान कर दिया. So I think behavior does this. So the behavioral economics की जो interventions है they do mainly this कि एक जो issue है उसको आप complement करने के लिए, उसके solution को complement करने के लिए आप behavioral intervention लाओ. Behavioral economics never says we're going to do कि हम सारे मसले खुद ही ख़त्म करेंगे and we're going to have the largest impact. They're always saying कि there's going to be a traditional solution, but उस traditional solution को काम कराने के लिए you need to have these small nudges or small tweaks that you do, keeping in mind that you're dealing with human agents and they may have biases and heuristics that they're using. Okay, you talked about nudges. I mean, nudges is basically your guiding behavior. So where do you draw the line about what is ethical? I mean, this is a conversation that we have had in our class. Where do you draw the line? इसके बाद this is more like manipulation and इससे पीछे आप guide कर रहे हो? This is an excellent question, I think, because this is something that concerns policymakers a lot, right? So policymakers are in some cases, they can be very paternalistic, but in others, they would also be very careful about this in the sense that they say, अगर हम किसी को जैसे सेविंग्स में ऑटोमेटिकली डाल दें तो कल को लोग कहेंगे जी आप कौन है डिसाइड करने वाले, राइट. एंड सो दे डोंट वांट टू मे बी टेक दैट कंट्रोल अवे. So it is something which is, it's a gray area in the field in the sense that it's almost your own ethical guiding principle on which you have to rely on, which is a dangerous thing to do. People could exploit this very easily. So what does the field actually say about this? They say generally, अगर आपका nudge है तो वो कोई nudge ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनकी choice ख़त्म कर रहा. If there's a nudge that's adding to the choice, that could be welfare enhancing, right? So they have all of their original choice sets and उसके ऊपर आप additional कुछ डाल रहे हो. So that's one thing. The other is you should always have the option to not follow that nudge. So ज़बरदस्ती कोई नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में. राइट. सो इस फील्ड में जैसे टैक्सेस पे बहुत इस काम होता है और नजेस उसमें आते हैं. योर नज का आइडिया ये कि यू जस्ट गोइंग टू प्रॉड पीपल इनटू डूइंग समथिंग. सो आप उनको कहो कि जी आप टैक्स दे दें. अब उनको पता है देयर इज अ लॉ लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच दे हैव टू पे टैक्सेस. Telling people now should not be adding to it. There is an already legal framework, but the way you tell people may have a difference. So we've done work in Pakistan जहाँ पे हम, so this is in KP, we work with the KPRA to send reminders and SMS reminders for people, merchants specifically, जिन्होंने हर महीने अपनी फाइल करनी होती है कि आपका टाइम आ गया फाइल करने. अब ये कोई नई नॉलेज नहीं थी. They knew that this is something that's there. They also know that there's nothing additional in this SMS. So उसका मतलब ये है कि अगर मैं ना SMS को फॉलो करूँ तो मुझ पर कोई एडिशनल पेनल्टी नहीं पड़ेगी. वो पेनल्टी तो जो लॉ के हिसाब से पहले ही पड़ सकती है. सो
you have to be very careful in that these two guiding principles are there, and SMS is not taking your choice away, and SMS is not legally binding, right? So the nudges, if you kind of follow these two things, you should be safe. But having said that, it's very easy to not follow this as well, right? So it's very tempting कि आप एक ऐसा solution ले आओ जब आपको पता है कि लोगों की बेहतरी XYZ में है, तो मैं उनको उसमें enforce कर दूँगा. मैं कहूँ जी बस मुझे पता है आपको क्या चाहिए, you just do this. It's very empowering to do this, but you have to be very careful that you don't end up doing it. We have, in the academia at least, we now have what we call ethical boards and institutional review boards. There's one in LUMS as well. And there are multiple ones in Pakistan. And what they're supposed to do is exactly this. These are independent people not related to your field and not related to the team that is doing these nudges. We're supposed to evaluate कि इसमें कोई coercion तो नहीं है, इसमें कोई आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि there's a chance कि even 1% of the sample is going to be worse off. Because if so, then for the sake of research, you should not be doing it. So there are some institutional now safeguards against this, but I feel a lot of this is still something that as individuals we have to enforce. Okay, so you talked about policymakers. Are there any challenges that like behavioral economists they face because policymakers usually follow the traditional economic interventions in the neoclassical school of thought? So agar behavioral economics ki through koi interventions aa rahe hain, do you guys face any problems in convincing them? I would say over and above the usual problems we face with policymakers, no. So वो उनसे deal करना वैसे ही aligning the research to what they need is the main task. It remains that same task. They may disagree with how you're pitching in the sense कि आप जो solution दे रहे हैं वो शायद ना align कर रहा हो. But I think behavioral intervention का उनको मज़ीद कोई मसला नहीं होता. Obviously ये जैसे अभी मैंने बात की थी कि वो उनको ये they want to know कि we're not adding an additional rule on people, and if you can tell them that it's not, it's like there isn't कोई ज़बरदस्ती नहीं है जो आप intervention दे रहे हो, उनको फिर इस चीज़ का मसला नहीं होता. In fact, in a lot of cases they like behavioral interventions because they're very cost effective. तो जैसे ये आपको SMS का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, KPRA का ₹0 उस पर लगा था बिकॉज हमने ये नहीं कहा कि आप SMS पहले नहीं भेज रहे थे आप भेजो, वो पहले भी भेज रहे थे. हमने कहा उसको जिस तरह भेज रहे हैं उसमें जो आपने मैसेजेस डाले हैं वो आप उसको रिवाइज़ करें. एंड वो रिविजन एक्चुअली दैट वर्कड वाज एसेंशली कि आप बजाय ये कि आप कहो कि जी अगर आपने नहीं किया तो इस फ्रेमवर्क के अंडर हम आप पे इतनी पेनल्टी डालेंगे और हम इस वक्त आएंगे ये वो फलाना, आप बहुत डिटेल्स जब देते हो तो वो पीपल बाय नाउ नो कि यहाँ पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, सो दे डोंट बाय इट. The only thing they changed was they said if you don't pay file your taxes on time, we may take legal action. So थोड़ा सा वेग कर दिया था, उल्टा काम किया पाकिस्तान में कि बजाय कि आप स्पेसिफिक पेनल्टी दो, उन्होंने कहा जी वेग कर देते हैं. अब वेग कर दिया तो लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होने वाला है, so they started to file taxes. Right? And this is low cost. So it costs the KPRA government nothing to do this because वही चीज़ जो पहले जा रही थी उसका टैक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया. Right? And उससे आपकी फाइलिंग बढ़ जाती है. So in my experience at least, they like these behavioral interventions because it's low cost. So you're basically saying कि आपकी कोई बजाय कि आप एक बड़ा सा framework change करें या आपको dozens other departments को convince करना हो, हम कह रहे हैं आपके जो existing framework है उसमें हम जो existing आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें और फिर आप करके देखें, कुछ महीने करके देखेंगे काम करता है कि नहीं करता. Generally they have been quite happy with this even in Pakistan. But yeah, I think the main issues जो उनको होते हैं वो उनको behavioral से नहीं होते, उनको generally शायद जो आप propose कर रहे हो, research कर रहे हो उससे शायद हो रहा हो कि don't intervene in what we're doing. Regarding behavioral policies, I mean behavioral economics is I would say a relatively newer field. So and we talked about nudges. So do these nudges remain for a long time या फिर do you need to keep giving them this nudge कि ये करना है या फिर if you stop doing them, will they revert back to their old ways? No, that's an excellent question. I don't see nudges working for a long time in the sense that the literature that I've looked at, it doesn't. Even though मैं आपको जो KPRA का example दे रही हूँ, वो इन्होंने नज भेजे ही, SMS भेजे ही 6 महीने थे. उन 6 महीनों में आपको पहले महीने में पीक नज़र आता है और फिर आपको नज़र आ रहा है विजिबली कि इट्स पीटरिंग आउट, राइट. इशू क्या है कि जब आप इस किस्म के नजेस देते हो, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि जी हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, उन्होंने 1 महीने ट्राई कर लिया, फिर उनको पता चल गया जी किसी पे लीगल एक्शन नहीं हो, अगले महीने वो नहीं काम करेगा.
So if the context in which you're working in is working against a nudge, वो nudge का effect ख़त्म हो जाता है. So एक तो ये है. दूसरा ये है कि then this is why behavioral economists say कि हम आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर वो नहीं काम कर रहा तो हम उसको थोड़ा सा इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए उसकी फ्रेमिंग चेंज करेंगे या उसकी हम अप्रोच चेंज करेंगे कि आप पर्टिकुलर बायस को टारगेट करो एट्सेट्रा. बट वी विल नॉट रिप्लेस द मेन इंटरवेंशन दैट यू आर डूइंग precisely because the behavioral interventions tend to over time they tend to dissipate. Right? उनके effects ख़त्म होने शुरू हो जाते. There are some interventions जो कि जैसे इंश्योरेंस वाले में आपके जो पेंशन स्कीम्स हैं उसमें बहुत काम कर रही हैं, अभी तक काम कर रही हैं, which is basically जब आप ऑटोमेटिक इनरोल करते हो लोगों को कि जब आपकी नौकरी लगी है तो हम आपको ऑटोमेटिकली एक पेंशन स्कीम में इनरोल करें, आपकी मर्ज़ी आपने उससे निकलना तो निकल जाए. अक्सर लोग नहीं निकलते. That remains the case, right? So there are some exceptions जहाँ पे long-term effect नज़र आया है. But I would say the majority of them have short-term impact. So, if there's a bias that you're trying to deal with, अगर आपका बाकी context उस bias के around change नहीं हो रहा, तो people do revert to what they were doing before. At least that's what we've seen, at least in the low-income and developing world. But yeah, it's also something, as you say, it's an emerging field. So maybe in the future we'll see something that has a long-term impact. Okay, my second question also it relates to this. I mean, as you said, it's constantly evolving. So what do you see is the biggest gap within this field that needs to improve? I mean, so for specifically for what I work in, जो मुझे नज़र आता है वो है पाकिस्तान के केस में डिजिटल फाइनेंस का अपटेक बहुत कम है. यहाँ पे बिहेवियरल इंटरवेंशंस काफ़ी हो सकती हैं. अभी हो नहीं रही, लोग डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट करेंगे, आई एम गेसिंग, बट अभी नहीं हुई. सो दिस इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू दैट जेंडर एस्पेक्ट ऑल्सो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि it's puzzling why the take-up for women is so much lower than men of these digital wallets. I think it has to do with the intra-household bargaining. It also has to do somewhat with financial education and literacy and all of that, but also access. Access limited है not because of resources, वो access limited है because of socio-cultural reasons as well. And access का मतलब ये है कि फ़ोन का access भी शायद उस वजह से limited है. यहाँ पे behavioral interventions काफ़ी हो सकती हैं, अभी तक हुई नहीं हैं, but इस तरफ को आ रहे हैं. So I do know a lot of people who are now actively working in the gender space. And using either direct behavioral interventions or something very adjacent to it. And similarly for digital take-up, I think there may be a lot of scope in how you design these products or what features are available to whom, जिसकी वजह से आप इनकी usage बढ़ा दें. So अगर आप SSC में देखें, we have a wonderful colleague, Dr. Mariam, who's working on health using these digital mobiles and so digital app. And so what she's doing is she's saying, well, it's when you go to a health specialist, this is not something that is available to everyone in the household. Specifically, women compromise and they would go, अगर बच्चा बीमार हो चला जाएगा, अगर मियाँ बीमार है चले जाएंगे, but अपनी health पे अक्सर नहीं पूछते. What if that health access to health comes to their phones? फ़ोन में पूछना भी मुश्किल होता है, but one thing that we do a lot of is send voice notes on WhatsApp, and so सुनना बड़ा आसान होता है. So what if we use AI and we use some of these digital techniques to make that a bit more approachable and a bit more accessible? उसको किस तरह आपने accessible बनाना है, उसमें behavioral interventions आ सकती हैं, right? कि किस तरह आपने उनको acceptable करना है for the household and for the moment to use. But as I said, this is a space that is emerging right now. It hasn't been researched so far, but there is a lot of potential here and a lot of scope for doing interventions that are going to improve welfare for people. So fingers crossed that happens soon. So could you say कि ये जो नई technologies आ रही हैं, like they can help make behavioral economists की job a little bit easier in terms of outreach, especially के, for example, you're talking about MFIs, but like all these things. So I mean, this last question is like a kind of a what if question. Ke if you could implement one behavioral intervention at a scale particularly for low income household, what would it be and like why would you implement that?
It's a very difficult question. I don't know how to pick one because even the things that I work on are like more than one. So it would be difficult to do. But I would say, given the kind of evidence we have for this and given the kind of appetite we have from the households, हमारे घरों में रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं होती और होती भी है तो बहुत कम होती हैं. सो जो गवर्नमेंट की जॉब जैसे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि उसके आपको पेंशन बड़ी अच्छी मिलती है, आपको प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं मिलती. देयर आर वेरी फ्यू फर्म्स दैट विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ पेंशन स्कीम. आई थिंक दैट देयर नीड्स टू बी मोर देयर. आई मीन लाइक अ पॉलिसी पुश के एक पेंशन की देयर शुड बी समथिंग अबाउट that will just provide you with some security at the old age, because I think that is tied to how we structure our families. कि बच्चे पास ही रहे, बच्चों की तादाद कितनी हो, population growth. A lot of this is tied to how families think about the future. So, उसको facilitate करें. ये जो automatic enrollment बाहर होती है, but we've seen in developing countries जहाँ पे जो firms कर रही होती हैं उनकी savings बहुत improve हो जाती हैं. And we need to facilitate that a bit. It's tied to multiple behavioral biases, right? It's tied to being impatient, for example. कि आप अगले 2 साल के बारे में सोच लो, 5 साल के बारे में सोच लो, 50 साल के बाद सोचना थोड़ा मुश्किल होता है. आप कहते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उससे तक. But the point is you have to act now. And we don't do it. I mean, I personally, it's a struggle for me as well, right? To think that far in the future. So why not work a bit here? It's not an innovation in the sense कि ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ ईजाद हो रही है. This is something tried and tested, but in our context, we don't have a policy push for it. So if you could maybe figure out something like that, जहाँ से लोगों को एक basic level of, it's almost like social security मिल गई. आपको पता है कि you know old age में आपके पास कुछ ना कुछ access to resources होंगे. Yeah, so if I had to pick one, which is a difficult thing to do, I would pick that. उस behavioral intervention में wouldn't that one problem be के the traditional norms, like the social preferences, जिसमें like your kids are considered to be a retirement plan, so would it have to target that or like to break that down essentially, or maybe would it offer something else like an opt-in opt-out वाली policy? So opt-in opt-out तो I think करना ही पड़ेगा. वही जो हम जो ethical के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें उस हिसाब से you will have to allow that, right? You can't bind people कि आपकी तनख्वाह आ रही है और उसमें से 20% हमने बस fix कर दी है किसी pension scheme में. So having said that, I think ये भी I'm basing this on evidence that's coming from developing countries. It's not coming from Asia because यहाँ पे नहीं हुआ, but in South America, I mean, I'm not sure about Africa, but in South America, at least they have tested when you do give these pensions. This takes time, right? So over time, the size of the family starts to get smaller, which is something we desperately need in Pakistan. We're not number one in many things, but इसमें हम number one है और ये बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए. हो चुका है, but I would say आगे future में और मुश्किल होएगा. We just don't have resources to sustain this population growth. So over time it will have an impact. ये like 5-10 साल की बात नहीं है, but अगली generation में ये फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, which is worthwhile to do. Given that आप ये भी नहीं कर रहे, so it's not as if कि आप लोगों से पैसे ले रहे हो, आप उन्हीं के पैसे उन्हीं को दे रहे हो और बल्कि उनको कंपाउंड करके बाद में दोगे कि इस पर अब आप you're earning something on it, right? Usually these pension schemes have a matching mechanism. So you're paying something, your employer pays something. So it's a part of a incentive that you're getting. So it is not welfare reducing, it is welfare enhancing. Over time, you would expect to see this reliance on kids as a social security will reduce. And that I think will help the earning members of the family as well, because उन पे वो pressure थोड़ा कम हो जाएगा when you go in your job. And आपको ये पता है कि जी मैंने अपने बच्चों को भी देखना है, बट मैंने अपने माँ बाप को भी देखना है. And knowing कि माँ बाप के पास और कोई चारा नहीं है, that's a difficult, thing to imagine. So थोड़ी सी अगर आप लोगों को उस चीज़ में facilitate करोगे, I wouldn't be surprised if that starts to have an impact on how people make decisions about family. Okay, so this makes me think if you're talking about behavioral interventions, so they would have to be they have to be for long term, so that wo pure, for example, if you're targeting, in this case you're targeting people so that there is less reliance on their children, that would take a long time. So behavioral interventions to change their behavior, essentially you would have to continue this to a long period so that behavior changes. Warna wohi baat hai jis tarah we were talking about pehle ke if we stop it
maybe at a midpoint they will like revert back. So is there like a defined time for something के इसके इतना तो करना ही है, इसके बाद शायद probably कि कहते हैं behavior change हो जाए, या इधर इससे पहले किया तो it might not be effective? Yeah, no, I don't think so. I think जो हम पहले बात कर रहे थे कुछ चीज़ों के, तो because आपका context is not very amenable to that change, वो आपका शॉर्ट टर्म में ही इफेक्ट खत्म हो जाएगा. जो ये लॉन्ग टर्म वाले इफेक्ट है वो हम कह रहे हैं हैबिट फॉर्मिंग होना चाहिए, राइट? सो इफ़ इट इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग, इट शुड गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और फिर जब एक दफ़ा आदत पड़ जाएगी तो लोग शायद उसको खुद से भी सस्टेन करें. जो लंबा टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है बिकॉज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्म चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. नॉर्म्स आर वेरी हार्ड टू चेंज. सो सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स, फैमिली नॉर्म्स, दे आर रिडिकुलसली हार्ड टू चेंज, राइट? एंड सो दोज टेक टाइम. सो अगर आप उसको कोई इंटरवेंशन टारगेट कर रहे हो, उसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा. आई वुडंट से एज अ ब्लैंकेट every behavioral intervention should take a long time, because they don't. And in fact, some of these habit formation वाली वो उनका पॉइंट ये होता है कि शुरू में कर दें, लोगों को आदत जब पड़ जाएगी, जब उसका फ़ायदा नजर आएगा, वो खुद ही सस्टेन करेंगे. And then the government doesn't need to do anything, or we don't need to do anything. But there are others जहाँ पे you have to put in the time, because the thing that you're trying to change, it's taken decades to form, and so it'll take decades to break down as well. Dr. Saeed, thank you so much for this enlightening conversation. I mean, this has been eye-opening for me, and also I hope for our viewers as well, and especially for our listeners. This conversation shows that a deeper understanding of behavior can help shape effective and more compassionate policies. And I hope you guys enjoyed this podcast. Thank you. Thank you so much.